Okay students, welcome in EduEthics, and today we are going to revise our chapter that is changing around us. And first of all we are going to see types of changes. जो बदलाव हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में होते रहते हैं, तो कुछ चेंजेस होते हैं. तो चेंजेस जो होते हैं वो क्लासिफाइड हो चुके हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं चेंजेस. तो कुछ चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल, कुछ होते हैं इरिवर्सिबल, तो कुछ होता है फिजिकल एंड केमिकल, राइट. तो ये सब चेंजेस होता है, ये सब टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं जो हमारे आसपास होते रहते हैं. नॉट द स्टडी ऑफ चेंजेस. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. बेसिकली एवरीथिंग अराउंड अस इज चेंजिंग. चेंजेस इज द वेदर एंड टेम्परेचर फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट एंड आर अ वेरी अपीयरेंस. तो इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. आप कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें अभी आगे बढ़ना है. हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं. आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से. मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रही हूँ. सो आई होप आपने ले लिया होगा. अब हम नेक्स्ट करते हैं. ये इसका भी आप ले लीजिए एक बार. ये चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं. देयर आर मैनी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, सच एज इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, growth of hair and nails, and a baby growing into an adult are some of the changes. तो आप जब बड़े होते हैं फिर आप छोटे नहीं हो सकते, right? Some of the changes that take place in human life, these changes are slow and take place over a period of time. On the other hand, there are many changes which are very fast. Example, melting of ice over a flame, the burning of matchstick, and the bursting of a cracker. There could either be a change in the physical state of a substance or a change in the size and shape. Now we are going to see classification of changes. So changes that occur around us can be broadly classified as reversible change and irreversible, depending on whether और नॉट दे कैन बी रिजर्व्ड. तो मैंने आपको रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ. तो देखिए रिवर्सिबल चेंजेस, तो उसमें हमको बता रखा है चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं. रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो चेंजेस जो कि फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकते हैं, और इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो चेंजेस जो कि फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकते. दे आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस, डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट दे कैन बी रिजर्व्ड. अब हम बात करते हैं चलिए डिटेल में दैट व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज. एग्जाम्पल भी लेंगे हम खूब. चलिए देखते हैं. लेट्स सी. देखो, changes that can be easily resolved by removing the cause of the change are called reversible change. For example, if you remove a tray or ice cubes from the refrigerator and leave it at room temperature for some time, ice cubes melt and change into water. When this same tray is placed in the refrigerator, changes to ice cubes again. We can say that the melting of ice cubes can be resolved by reversing the conditions. Melting ice cream, water and chocolate are all examples of reversible changes. तो इसमें मतलब रिवर्सिबल चेंजेस में हमें क्या बता रखा है, हमें कहा है कि वो चेंजेस जो कि फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल दे रखा है आइस क्यूब्स का, और इस एग्जांपल से ही आपको पता लगता है दैट
सॉलिड चीज़ें जो होती हैं वो भी रिवर्स्ड हो सकती हैं। और उसके लिए और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके आइस क्यूब्स के अलावा melting of ice cream, butter, chocolate and all these are reversible changes. अब इसमें melting of ice क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप आइस को मेल्ट करें तो फिर वो देखिए, अगर आप आइस को मेल्ट करें तो फिर वो बन जाएगा वाटर, और अगर आप वाटर को फिर से रेफ्रिजरेट करें, फ्रीज करें, तो फिर से वो बन जाएगा आइस, अपनी फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट रिवर्सिबल चेंजेस इज. Now, what about changes like condensation and evaporation of materials? अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, क्योंकि हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं, उसमें हमको सिर्फ ये रीड करना है, राइट? क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आई थिंक. नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, राइट? अब एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे या फिर रिवीजन कर लेंगे इसका, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम को देने में. देखिए, रीड कर लीजिए. मे भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक ना हो तो आप इसको रीड कर लीजिए. Now, what about changes like condensation and evaporation of materials? When molten ice is heated for some time, water starts to evaporate and steam escapes from the containers. This process is called evaporation. Now, if you hold a plate near the container, the steam will condense into small droplets of water. तो इसमें एक और रिवर्सिबल चेंज हमको बता रखा है, बताऊँ कैसे? इवेपोरेशन से कंडेंसेशन, क्या ये भी रिवर्सिबल चेंजेस? लेट्स सी, अगर हम आइस को अगर हम एक मॉल्टन आइस को हीट करें तो फिर वो इवेपोरेट होने लगेगी, राइट? वो वेपर्स बनने लगेगी. आप एक प्लेट ले लेना, प्लेट को उसके ऊपर रख लेना, तो जो इवेपोरेशन होगा, जो वाटर वेपर्स होंगे, वो प्लेट में इकट्ठे हो जाएंगे, राइट? कुछ देर बाद आप जब उसको हीट करना बंद कर दोगे तो फिर वो जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो नीचे आने लग जाएंगी. सो फिर से वो वाटर फॉर्म में आ जाएंगी. ओके, रिमेंबर. तो इट मीन्स दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. Now this is because steam comes in contact with the cold surface of the plate and again converts into the liquid form. This process is called condensation. Therefore, evaporation and condensation are example of reversible change. अच्छा, आप ज़रा स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का. The three states of water are interchangeable and no substances formed during any physical change. A physical change affects only the physical properties such as size, shape, and state of substance. Physical change are usually reversible. So what is physical change? So see, when no substance form
that is a physical change. जब सिर्फ शेप और साइज चेंज हुआ होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, दैट इज अ फिजिकल चेंज. दैट्स अ फिजिकल चेंज. ठीक है. और ये जो फिजिकल चेंज होता है यूजुअली रिवर्सिबल होता है. अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंज की. सो चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिजर्व दे आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस. वो चेंजेस जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से नहीं आ सकते उन्हें हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं. तो उसमें लिखा भी है चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिजर्व्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, matchsticks, paper or fuel is an irreversible change, as the ash cannot be changed back into the original substance. Germination of seeds and growing up of a baby are irreversible changes, as the growth cannot be reserved. तो अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है और वो उसकी हाइट बढ़ रही है तो फिर से उसकी ग्रोथ कम नहीं होगी बल्कि इंक्रीज होगी या फिर रुक जाएगी. फिर से वो वैसा जैसे पहला था वैसा नहीं हो पाएगा. तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज है. Irreversible changes are usually, we can say, they are chemical change. Okay, remember, it's important. अगला देखिए. ये बहुत important है. In some cases, irreversible changes result in formation of new materials which may be desirable. You might have seen your mother rolling the dough. Dough means atta, with a rolling pin and making chapatis. If it is not possible to get the dough back from the cooked chapatis, thus cooking is an irreversible change. तो जो कुकिंग है इस एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल चेंज का. जैसे कि आपने एक रोटी बना दी, कुक कर लिया उसको अच्छे से, अब आप उसको जो उसका डो है, आटा है, वो फिर से बैक उसकी असली पोजीशन में नहीं ला सकते. तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज हुआ. वन मोर एग्जांपल. You might have also noticed that milk gets spoiled when not refrigerated, particularly in summer season. This is called curdling or souring of milk, which is an irreversible change. Curdling of milk is also done by adding lemon juice to milk for making cottage cheese. Some other examples of irreversible changes include falling of rain, breaking of a glass, tumbler bursting of a cracker, death of a person, and decay of food.